So happy to have you here. MashaAllah. I hope Saiwal is treating you well. Chale perfect. So we're launching the class. You're so sleepy. I have a terrible headache, Ali. मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हारी you're lucky you've woken up. I have this excruciating headache thing going on since the past couple of hours, but inshallah. Let's do this. So last time I gave you guys this question. If you guys attended the tutorials, I requested my TA to do some questions with you on equations of motion. I hope that those helped you. I'm going to do some more questions with you. Okay. So पहले हम एक आसान सवाल करते हैं, फिर हम एक मुश्किल सवाल की तरफ जाएंगे. So equations of motion के अंदर एक क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन आया. A sprinter runs a 100-meter race in a straight line. He accelerates, write this down, from the starting block at a constant acceleration of 2.5 meter per second square to reach a maximum speed of 10 meters per second. He maintains this speed until he crosses the finish line. ठीक है? Question is, what time does it take the sprinter to run the race? Shabash, try again, please. So a sprinter runs a 100-meter race in a straight line. Straight line पहले बनाओ. और ये straight line में 100 meter की race है. He accelerates from the starting block. Okay. So let's say this is where the starting block is. He accelerates from the starting block at a constant acceleration of 2.5 meter per second square. Okay, so acceleration is 2.5 meter per second square. And he goes to a maximum speed of 10 meters per second. So मेरा सवाल ये है कि जब वो accelerate करेगा from starting block to get to this maximum speed, तो उसको कुछ time निकलेगा. And he maintains his speed until he crosses the finishing line. What time does it take for the sprinter to run the race? Wajiba. Time nikalna. Does the block mean rest? Starting block? Yeah. He accelerates from the starting block at a constant of 2.5 to reach a maximum speed of 10. He maintains this speed. Should we assume that he starts from rest in this question? Would it be safe to assume that he starts from rest in this question? Nikhil says 11. Inaya says 4. Shabash.
Ali Raza says 12. Rutba says 11.18. What is the answer? Shiraz, I'll just answer it. तुम Q&A में लिख दो. अभी सारे फोकस करें सवाल के ऊपर. तो let them focus. जी जवानो. Ali Raza, can I have you on the mic? Shabash, raise your hand. Come on the mic. Well done. Ali, you have to raise your hand. Now you have the mic, Ali. Can you unmute yourself now? Hello, sir. Hello, how are you? I'm okay. बताओ कैसे किया अली? सर ये मैंने एमसीक्यू किया हुआ था तो गैस किया मैंने. आपने क्या रटा आंसर बताया, सॉल्व किया? नहीं, वो मैंने गैस किया बस. लो जी, वाह जी. गैस ठीक हो गया, सही है. इब्राहिम, कैन आई हैव यू ऑन द माइक? शाबाश. Yes, Ibrahim, how do we do this? Sir, first I found out how much time it took during the period of acceleration. So if his acceleration is 2.5 meters per second square, that would mean that 2.5 multiplied by 4, it takes him 4 seconds to reach the speed of 10 meters per second. So the question is that when he reaches it, when it takes him 4 seconds, so how much distance has he traveled during that 4 seconds? So I use the equation of motion, x is equal to ut plus half at square, where x is the unknown variable, a is equal to 2.5, t is equal to 4, and u is equal to 0. बिल्कुल सही है. So well done. So basically, you're in a 100-meter race. You're at the starting block. Starting block पे आपकी initial speed will be 0. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू ट्रैवल द एंटायर 100 meters. आपकी मसला ये दैट acceleration 2.5 meter per second square is not throughout the 100 meters. It's just until you get to that 10 meter per second wala time speed. So अगर मैं acceleration is equals to v minus u over t लगाऊं, acceleration को लिख दूं 2.5, final speed को लिख दूं 10 because I hit a maximum speed of 10. My initial speed is 0. The time I don't know. From here, the time that I get is 10 divided by 2.5, which is what? 4 seconds. Ali Raza, आप देख लेना किस तरह करना है. 4 सेकंड में वो 10 meters per second की स्पीड पर पहुंच जाता है. अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, I think it will become easier for you. Speed time ग्राफ बनाते हैं. मुझे बताओ, does it start from rest? Yes. Does it have constant acceleration? Yes. Straight line. Then does it have a flat line? Because a constant speed pe travel karta, he maintains the speed until he crosses the finish line. So you should have a flat line. Do you guys understand this graph? कि शुरू में he accelerates up to 10 meters per second. तो इधर मैं लिख देता हूँ ये 10 meters per second है. और कितना टाइम लगा इसको 10 तक पहुंचने में? जवानों, can somebody tell? In how much time did it hit the speed of 10? 4 seconds. वो ये पूछ रहा है, how much time does it take for the sprinter to run the whole race? मुझे बताओ, ये speed time graph है. Speed time graph का area under the graph क्या देता था? कुछ याद करो O level से. Speed time graph का area under the graph क्या देता है? Distance. If it's velocity time, it will give you displacement. अब मुझे बताओ, ये जो 100 meter distance है, is this the area under the graph of the whole thing? Yes or no? या is it just one part? 100 meter जो distance given है question में, ये कौन सा distance है यहाँ पे? triangle का, rectangle का, या पूरी shape का? It's of the entire, because 100 meters is like the whole race. So ये पूरा area under the graph
ये पूरा area under the graph is 100 is equals to 1/2 of, can you see this is a trapezium? ये सबको नजर आ रहा है that this is a trapezium? So half into height into sum of parallel sides. Half into height into sum of parallel sides. अब मुझे बताओ 100 is equals to 1/2 of, height कितनी है 10, height कितनी है 10, आपको पता ना ये height होती है, ये दो parallel sides होती हैं, जो दोनों parallel sides के बीच में distance होता है उसको height कहते हैं. This is S1 and this is S2. Got it? So half into height into sum of parallel sides into S1 plus S2. अब सवाल ये S1 और S2 कितना होगा, जरा गौर से देखना जवानों. I'm going to rub this line, this line, this line, this line, this line, this line, this line. Yeah. मुझे ये बताओ that let's assume that this time is T. This time is T. तो ये वाली length कितनी होगी? What will this length be? Will this be T minus 4? Yes or no? You can do it separately for a triangle and that as well. उससे भी आंसर आ सकता है, but इस तरह भी कर सकते हो. ये वाला टाइम कितना होगा? Will it be T minus 4? Yes. And what will this entire length be? ये भी तो parallel side है. What will this entire length be? This will be T. So दोनों parallel sides आ गए आपके पास. S1 is T minus 4 and S2 is T. So इधर मैं लिख देता हूं plus T. Does that make sense? So 100 is equals to 5 into 2T minus 4. Are you guys with me on this? 100 is equals to 5 into 2T minus 4. अब ये 5 और ये 100 कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा. 20 is equals to 2T minus 4. So 2T will be equal to 24 and T will be equal to 12 seconds. Is this clear? Everyone? Yes. Ali Raza? Yes, sir, it's clear. कुछ समझ आई? जी ना पे. सर ये सवाल बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरा है सर मेरे. हाँ बताएं क्या गुजरा सर के ऊपर से. सर यहाँ लाइक जब आपने ग्राफ ये जब 4 सेकंड के बाद से सर कुछ समझ नहीं आया. नहीं ये ग्राफ नहीं समझ आया, ये कह रहे हो? सर आपने लाइक यहाँ तक समझ आ गया जब आपने 4 सेकंड लाइक निकाले थे, बट उसके बाद जो आपने ग्राफ बनाया और ये सारा सॉल्व किया नहीं समझ आया. सो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लो. क्वेश्चन कहता है he accelerates at a constant acceleration of 2.5 meter per second square. So when you have a speed time graph from O levels, you should know that speed time graph का gradient gives you acceleration. लिख लो, speed time graph का gradient gives you acceleration. और अगर speed time graph बना हुआ हो और कहे constant acceleration है, आपके जितने questions होंगे ना of this equations of motion, उन सब में acceleration should be flat line, like inclined, sorry. क्योंकि gradient shows acceleration and acceleration is always constant for equations of motion. क्या ये बात समझ आएगी दाफे? जी सर. अब 4 seconds हमने निकाल लिए. For 4 seconds our acceleration was constant and we hit a top speed of 10. सही है. So 4 seconds पे पहुंच के हमारी स्पीड होगी 10 और उसके बाद क्वेश्चन कहता है that he maintains this constant speed until he crosses the finishing line. So वो अब यही स्पीड मेंटेन करता है आखिर तक. क्या ये ग्राफ समझ आया? जी सर आ गया. अब it's always good to make a graph in these questions. सही है. It's always good to make a graph in these questions. बहुत काम सीधा कर देते हैं. अब मुझे बताओ ये जो 100 मीटर डिस्टेंस है ये क्या चीज है? ये ग्राफ पे कैसे शो करें? स्पीड टाइम ग्राफ है. एरिया अंडर द ग्राफ. बिल्कुल, बिकॉज ये हमें मालूम है ओ लेवल से एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, ग्रेडियंट गिव्स एक्सेलरेशन.
So ये 100 मीटर इस ट्रायंगल का एरिया या पूरे ट्रेपीजियम का एरिया? पूरे ट्रेपीजियम का सर। सही है। So पूरे ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हाइट हो गई 10 क्योंकि ये हाइट है। पैरेलल साइड्स जो बनती हैं वो दो बनती हैं। वो एक यहां से स्टार्ट होती है और इधर एंड होती है, यहां से लेके यहां तक, और दूसरी पैरेलल साइड इधर स्टार्ट होती है और इधर एंड होती है। डज दैट मेक सेंस? जी सर। तो अब मैंने यहां पे टाइम टी एज्यूम कर लिया, मुझे नहीं पता ये टाइम कितना था, मैंने टी लिख लिया। तो इस साइड की जो लेंथ है क्या वो टी नहीं होगी? टी होगी सर। और इसकी लेंथ कितनी होगी? दिस टी माइनस माइनस दिस, 4 टी माइनस 4। 4 माइनस टी क्यों नहीं लिखा आपने? सर, बिकॉज टोटल टी है ना, 4 माइनस टी तो फिर हाँ नेगेटिव हो एग्जैक्टली, जाएगा। 4 माइनस टी तो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज ये लेंथ बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। सो एक साइड होगी टी माइनस 4, दूसरी साइड होगी टी, ऐड किया, आंसर आ गया 12। सॉल्व किया उसके बाद। आई गेट इट सर, थैंक यू सो मच। नो वरीज। यस अली, अली क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, if we use the first equation of motion to find the time it, मतलब acceleration के दौरान जितना time लगे, which is 4 seconds, and then we use that in the second equation of motion, and we find the distance it traveled while it was accelerating, and then we subtract it from 100, and using that distance, we put it into speed is equals to distance by time. तो वैसे भी हो जाएगा ना sir? Same thing. Okay. Yeah, same thing. ठीक है। All right. Please write down another question. Your next question is, a stone is projected vertically upwards with a speed of 15 meters per second. Air resistance is negligible. What is the maximum height reached? So, please याद रखिए, जब भी ये लफ्ज आए air resistance negligible, underline this and note it down. Whenever air resistance will be negligible, your acceleration will be purely due to gravity, which will be 9.81 meter per second square on Earth. So if they don't mention anything, then you have to assume it's Earth. Now find out what is the height reached. Shabash. Please find out what is the height reached. Ali. Yes, sir. Ali Raza. A stone is projected vertically upwards with a speed of 15 meters per second. Air is negligible. What is the maximum height reached? Joanna, I'm working with my dev. Inshallah, एक feature आने वाला है, मुझे पता चल जाए करेगा कि कौन active है screen पे और कौन inactive है. I will know. I'll tell you in class. Inshallah. We started working on it. So, a stone is projected vertically upwards with a speed of 15 meters per second. So, ये मेरे पास ground है. I have this stone. I throw it up at a speed of 15 meters per second.
always make a picture. It reaches whatever maximum height. Maximum height पे पहुंच के उसकी speed 0 होगी, तभी तो उसको maximum height कहेंगे. वो रुकेगा तो वो maximum height पाएगा ना. अगर let's say ये screen का कोने पे maximum height नहीं आई, तो अभी मेरा हाथ और ऊपर जाएगा. अगर स्क्रीन के कोने तक मेरी मैक्सिमम हाइट आती है तो मेरा हाथ रुकेगा इधर, तब मैं कहूंगा मैक्सिमम हाइट आई है. If this is not maximum height, my hand will go beyond the screen. So 15 meter per second की स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं. As we go up, our speed decreases. That makes perfect sense. The reason for that is we're moving against gravity. Now, what is the maximum height? I don't feel any need to take out time. क्योंकि टाइम के बगैर क्वेश्चन टाइम के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा. So 2as is equals to v square minus u square लगाते हैं. अभी देखते हैं. अब्दुल्ला, I'm going to answer that question. मुझे ये बताओ, इन तमाम इक्वेशन में, I've told you this before, are all of these quantities scalar or vector? We've done this before. Are all of these quantities scalar or are they vector? They're all vectors. They're all vectors. सारे vectors. But direction important होती. So if I'm taking 15 to be positive, will my gravity नीचे की तरफ है 9.81 meter per second square, will this be positive or negative? Well done, Maheen. Will my gravity be positive or negative? बताएं जी. Gravity is going to be negative, minus 9.81. Minus 9.81. So 2 into acceleration through gravity minus 9.81 into s. S ये वाला डिस्टेंस है, यहां से लेकर इधर तक h. s कह लो उसको. अच्छा, अब बड़े गौर से सुनना, बिकॉज यहां पे बड़ी कंफ्यूजन आएगी. अगले सवाल में यू माइट गेट दिस रॉन्ग. मुझे बताओ, एम आई गोइंग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? Am I going नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? Going from bottom up or up down? Very important question. Bottom up. So displacement का arrow should be like this. अब मुझे बताओ, displacement should be positive or negative? बहुत जरूरी सवाल है. अगले सवाल में यही गड़बड़ होती है जो अगला सवाल दूंगा मैं. It should be positive. ठीक है, so यहां हम लिख लें plus s. Like s लिख लें. S लिख लें. Is equals to my final speed is 0 and this is the negative of the formula and my initial speed is 15 whole square. Does that make sense? So I'll get s is equals to minus 15 square divided by 2 into 9.81. That's also with a negative sign. Negative will cancel out. So displacement कितनी आ जाएगी? Abdullah, can I have you on the mic very quickly? Abdullah Sheikh, the guy who had the question. शाबाश, जल्दी से आ जाओ. हाँ, so मैं बता देता हूँ. दो कंफ्यूजन है. इनाया, can I have you on the mic? आप क्वेश्चन अगर माइक पे पूछ लोगे तो सबके लिए आसान हो जाएगा. Yeah, go ahead. Inaya. Yes, sir. Sir, since the object is moving against gravity, gravity acts downwards, right? The Yeah. object is moving upwards. So why would the displacement be positive? I didn't understand that. हाँ, so मुझे बताओ, when I wrote this as plus 15, 15 was pointing up or down? Up. Up. तो इसका मतलब है मैंने upward direction को positive assume कर लिया. Yes, sir. इसका मतलब है any vector that points upwards is going to be positive and any vector that points down is going to be negative. Yes, sir. अब मुझे बताओ, you start from here and you finish here. Is this the arrow for your displacement? Yes or no? Yes, sir. So displacement, is it pointing up? Yes, sir. So it's positive. That's why. So positive. अब मुझे बताओ gravity के बारे में क्या ख्याल है? Is gravity pointing up or down? Sir, downwards. हमेशा downwards. So अगर मैंने upward को positive किया तो gravity क्या होनी चाहिए? Negative, sir. Downwards. इसलिए minus लिया. Is it now Okay, clear? sir. Got it. Yes, sir. No Thank problem. you. Hassan, is it now clear? इनाया के क्वेश्चन को मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा. हसन ने पूछा why negative gravity? Perfect.
लिख लेना हसन, ताकि जो भी छोटी बहुत सब तो छोटी सी बात कोई समझ आई होगी, एक पॉइंट ही होगा जो तुम्हें समझ आया होगा, लिख लेना वो, ताकि तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज ना करे. सो गाइस, व्हाट इज द आंसर? 11.5 मीटर्स, 4.6 या 11.5 मीटर्स. ठीक है, डन. चले अगला सवाल देखिए. क्वेश्चन लिखो गाइस. द क्वेश्चन इज a hot air balloon. A hot air balloon is moving vertically upwards. A hot air balloon is moving vertically upwards with a constant speed of 3 meters per second. Okay? 3 meters per second is the speed. A sandbag is dropped from the balloon. It takes 5 seconds for the sandbag to fall to the ground. What was the height of the balloon when the sandbag was released? Shabash. Really, really important question. Shiraz, answering your question now. I just want to ask that either I take your crash course recordings and complete till dynamics and then join again with your live classes, or either I can take live classes with you but can't properly prepare for mids. So Shiraz का सवाल ये है कि crash course की recording ले लें because Shiraz ने classes miss की and complete till dynamics and then join again. बिल्कुल हो सकता है. And then join again with your live classes, or either I can take the live classes but can't properly prepare for mids. So Shiraz, I'm guessing that you're giving your A-level exam, not your AS exam, right? So you can afford to, you're giving the AS. You're giving the AS. So mids की preparation करनी है. So उसके अंदर तो शिराज डायनामिक्स तक तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है सारे नोट्स लेक्चर्स. शिराज ऑफ कोर्स यू कैन कम ऑन द माइक, जल्दी से आ जाओ. जी शिराज. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम कैसे आप? अस्सलाम. बिल्कुल ठीक. So I don't know how this will sound क्योंकि हमारे जो कॉलेज के सर हैं, he has completed till density and pressure, which is like way ahead from dynamics. So sir, Yeah. I just wanted to ask, तो आपने dynamics तक recordings दिए हैं, तो मैं अपना core जो strength है वो dynamics तक strong रख सकूं. So at least I can perform something in my mids क्योंकि that's मुझे अभी नहीं आती. So basically you have all of the content till dynamics, right? जी sir, it's like from your recordings as well. हाँ, जो आपके मॉड्यूल के अंदर ही होंगे. जी जी. तो आपको करना ये चाहिए कि आप मुझसे आगे चलें और आप वो सारी देख लें ताकि आपका मिड टर्म सही हो जाए. Yes sir, because मैं अच्छा sir, the reason I asked you the second option क्योंकि obviously your recordings are not same as the live classes, the concepts are same, but आप सवाल कभी कभार advanced करा देते हैं या तो कभी कभार you know like on the flow करवा देते हैं. So I just wanted to know like देखो, like all these so when you take the recorded classes, obviously the recorded classes are being updated, but live class के अंदर होता ये कि looking at the mood of the class and the pace of the class, I pitch in new things. But live class is slower as compared to the recorded में you go on your pace. So yes, so the reason why I gave you access to that was that you guys can go on your pace and at least cover your midterm syllabus.
सही है. So my suggestion is do both, which is through the videos, quickly finish your course, and in the live class, keep on coming in the live classes. Don't miss them so that you can do these difficult questions with me live. सही है. So इनाया कह रही है हमारे कॉलेज में सिलेबस ही खत्म. How can you end the syllabus यार? It is impossible. अच्छा. So I know, and I feel the pain because I was only a few years back in my A level, so I know exactly कितना काम कितनी तेजी से हो जाता है और ऊपर से गुजर जाता है. सो उससे बेहतर ये होता है कि कम करें लेकिन अच्छा करें और टाइम पे खत्म कर लें, लाइक मार्च से पहले. चलिए, let's do this question. A hot air balloon is moving vertically upwards with a constant speed of 3 meters per second. A sandbag is dropped from the balloon. It takes 5 seconds for the sandbag to fall to the ground. मैं पिक्चर बनाता हूँ. So एक hot air balloon है. उस hot air balloon के नीचे ये sandbag रखा हुआ है. ठीक है? SB, sandbag. The hot air balloon is moving up at a speed of 3 meters per second. A sandbag is dropped from the balloon. So basically, समझो कि हमने ये तार काटी and the sandbag drops from that level, and it takes 5 seconds for the sandbag to fall to the ground. 5 seconds लगते हैं. What was the height of the balloon? What was this height? What was the height of the balloon when the sandbag was released? This height h. Let's do this. So मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, which equation are you thinking of? Which equation? This first, second or third? Well done. पहला काम तो ये हो गया, s equals to ut plus 1/2 at square. And what acceleration are you taking? What is the acceleration that you're considering? Gravity, which is 9.81 because you're falling on Earth. ठीक है? ms minus 2. इस पे gravity बना लो कि sandbag ने नीचे आना है तो इसको gravity नीचे लेके आएगी. अच्छा, अब जवानों मुझे एक बात बताओ. Are you going, like, you've written that the balloon is moving up with a speed of 3 meters per second. That means that the sandbag, which is also connected to the balloon, was moving up at 3 meters per second. Correct? अब मैंने 3 के साथ जानबूझ के प्लस लिख दिया. तो इसका क्या मतलब है कि is G going to be positive or negative? Is G going to be positive or negative? जल्दी से बताएं. Negative, क्योंकि G is down. अच्छा, अब मुझे बताओ sandbag, is it going नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? Sandbag. Where is the sandbag going? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? जब आप sandbag को रिलीज करेंगे, नहीं, उसने कहा what was the height of the balloon when the sandbag was released? ऊपर से नीचे, top to bottom, top down. So this is down. अब मुझे बताओ, would you write H as positive or H as negative? Positive or negative? गौर से देखें. Upward is +3, so downward should be what? Minus H. सही है, ज़हन में रखना. टाइम के साथ I can't write plus or minus because time is scalar. Now the question becomes, जो सबके ज़हन में है, that somebody said, and I read this, that it starts from rest. No, it does not start from rest. Your sandbag is moving with your hot air balloon at this speed. So अगर sandbag ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हॉट एयर बलून अगर जा रहा है ऊपर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैंड बैग भी ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बिकॉज दे आर कनेक्टेड.
It's like ये पेन है, इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कनेक्टेड है. ये पेन ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो ये नीचे वाला पार्ट भी ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से. क्या ये बात समझ आ गई? Yes, that the sandbag is moving with this speed. Now, guys, when you cut the sandbag, the moment you cut it from here, तब ये नीचे क्यों गिरता है? Because there is an acceleration due to gravity acting on it, and they're telling you it takes 5 seconds to fall to the ground. हसन, हमें तुम्हें वही वाला पॉइंट समझाने लगा हूं. मुझे ये बताओ हसन, मैंने पिछले सवाल में पूछा था SUA, are these scalar or vector? SU and A. How do you evaluate which equation are you going to use? So I look at the things that are given. So I looked at time. So that made my task easy. That means third equation Farik, because third equation is 2as v square minus u square. It does not have time, and I need to use this time. So I'm left with equation number 1 and 2. Second was they asked for height. So first equation mein distance nahi aata, second mein aata hai. So that's how I landed with the second equation. हसन, ये सारे वेक्टर हैं, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. अब आप मुझे बताएं, आपने अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, जिसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है, तो शुड आई राइट प्लस एच और माइनस एच? आप नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो? सैंडबैग जब कटेगा, व्हेन सैंडबैग इज रिलीज्ड, व्हेन द सैंडबैग इज रिलीज्ड, तो नीचे जा रहे हो, इसलिए हम इसको माइनस एच लिखेंगे. इज इक्वल्स टू, would it be wrong to assume downward motion is positive? No. You'll get the right answer. Karke dekh lete. So minus h is equals to, now the initial speed of the sandbag, guys, was 3. The time was 5 seconds plus 1/2 of, ये देखो +3 था, ये मैंने +3 लिखा है. टाइम के साथ कोई साइन नहीं है. Acceleration is negative minus g, so minus 9.81 into t square. So into 5 square. Solve karo isko. So minus h will be equal to 15, and this will be minus 9.81 into 5 square divided by 2. That's like 122.625. So I get minus h is equals to minus 107.6, minus cancel. So I get 108 meters. Is this clear? आपको इक्वेशंस 50 बार भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नाइन अच्छा चीज ये, यू जस्ट डू लाइक 15 क्वेश्चंस एंड यू विल नो व्हिच इक्वेशन टू यूज. जस्ट डू 15 क्वेश्चंस, लिटरली 15. आपको सारी इक्वेशन वैसे याद हो जाएंगी. पेपर में ये तो होता है, इक्वेशंस याद होती हैं, समझ नहीं आती लगानी कौन सी. इक्वेशन सबको आती हैं. ये आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी टेल मी मुझे इक्वेशन भूल गई थी. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें ये भूल गया था, ये ut प्लस 80 स्क्वायर है, तो हम ये लगा के आ गए. मतलब ये तो बोंगी है, बिकॉज दैट मीन्स यू डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ एट होम. जस्ट डू 15-20 क्वेश्चंस, दे विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, बट यू नीड टू प्रैक्टिस, लाइक लिटरली ड्रिल दीज क्वेश्चंस डाउन, जो मैं करा रहा हूँ, और उसके अलावा और भी, ताकि आपका प्रॉब्लम खत्म हो. फहद ने पूछा है कि जी shouldn't the initial speed also be negative? No, Fahad. When you cut this, उस टाइम पे at t is equal to 0, your SV was going up with this speed. So this was your initial speed, because the sandbag was taking it up. जब आपने काटा, उसके बाद acceleration नीचे की तरफ हुई, but initially you were moving upwards with this speed. Yeah, final speed negative. G Nafi, go ahead. सर इसका काइंडली एक दफा ओवरव्यू दे सकते हैं सर प्लीज? बताओ, तुम मुझे ओवरव्यू दो. तो सर बेसिकली hot air balloon is moving vertically upwards with a constant speed of 3 meters per second. तो सर लाइक एक hot air balloon is being attached with a sandbag, और फिर हम लाइक जो रिबन है या जो भी है, जो थ्रेड है, we cut that, और फिर सर जो sandbag है it falls down, right? आसान अल्फाज में यस, यही है. And the balloon has a speed of 3, so that means that the sandbag also has a speed of 3, because they're connected. Now the question is, why does the sandbag come down to earth? That's because gravity is pulling it down.
they've already given you the time 5 seconds. You know that the distance that you're going down is h and your initial speed is 3. अब आपको पता होना चाहिए that these are all vectors, so you need to take one direction as positive and one direction as negative. We assumed upward to be positive, इसलिए हमने इसको लिख दिया +3, बाकी हमने माइनस लगा दिया हर चीज के साथ जो नीचे जो वेक्टर है और नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है. Right, Got it? sir. So sir, basically in these questions the key is कि हम negative और positive like mark efficiently कर लें. So फिर तो- that is important when you're moving in vertical motion. Horizontal motion में ये मसला नहीं आता, सिर्फ vertical में आता है मसला. Right, sir. Like for example, पिछले सवाल में ये मसला आया था minus वाला because we were moving vertically. But if you go to the question before that, कहीं पे भी ये वाली चीज नहीं आई पिछले वाले सवाल, because you're moving horizontally. जी सर. सही है. सो आज जो रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाला है जवानों, आज एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा अभी फौरन, मैंने उसको कहा है कि अभी फौरन लगाते हैं इंशाल्लाह. तो वो उसके अंदर आपका, इसके अंदर मैंने कुछ 3-4 सवाल और किए हैं जो बहुत मुश्किल है. लाइक मुश्किल इन द सेंस कि वो फौरन नहीं होते, तो आपने लाजमी वो देख लेना है. हम लोग, मैं ऐसे कहूँगा कि अभी लगा दे ताकि आप लोग को देखो, ताकि आप लोगों का थोड़ा हाथ बैठे, ताकि कल मैं आप लोगों को और सवाल करा सकूं. बट 3-4 सवाल और है हैवी किस्म के. यू मस्ट नोट देम डाउन बिफोर कमिंग टू क्लास टुमारो. खासतौर जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो आप लोग भी वो लाजमी देख के आना है कल की क्लास में. Sarah, I'll take your question. They didn't say air resistance is negligible. So how do we know acceleration is due to gravity? Yeah, that's a good question, Sarah. But because it takes 5 seconds to fall to the ground, I'm assuming it's a very small height. So small height के ऊपर air resistance negligible होती है. आपको सोचना 5 सेकंड लगते हैं जमीन पे गिरने में, तो हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं है, कम होगी. If it's a small height, then that means acceleration is constant. Done. Perfect. Any questions? आपका अगला लेक्चर आ रहा है अभी, प्लीज उसको गौर से देखना है. Yes, go ahead. Sir, I have a question. Sir, हाँ. जो हम ये इस केस में सर हमें तो वही क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो एयर हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यू कांट, इक्वेशन मोशन चलती ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे. मेरा एक और सवाल है नाफे आपसे कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो तो उसमें एक्सेलरेशन 9.81 ले सकते हैं, जिस तरह ये सवाल था. नहीं हॉरिजॉन्टल सर. था नहीं, क्योंकि 9.81 सिर्फ वर्टिकल मोशन में आता है. जी. हॉरिजॉन्टल होगा तो वो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन देगा, और अगर नहीं देगा तो फिर हम कोई और तरीका यूज करेंगे. यस सर. Got it. NIR, the trial class is going to go until March. The trial classes are every Monday. So, yeah, every Monday. It's also on YouTube. When are we going to do projectile motion? Right after we're done with kinematics. Abhi iske baad the equations of motion ke baad, we'll do graphs and then we'll do projectile. मैंने equation of motion पहले इसलिए कराई है because मैं चाह रहा था कि आप लोगों की practice अच्छी हो जाए. Done जी. Chale, that is it for today. Thank you so much, everybody. Have a great day. Take care. Khuda Hafiz. Yes, you can take tutorials, of course. Khuda Hafiz, everybody.